Welcome back to the channel. So we are live now. In the morning, if I talk about my daily schedule, today was the day which was worst scenario which I have ever faced. Reason being two or three more factors. First of all was the wealth factor. Secondly was the other factor was related to the politics which is played at home. And thirdly, which I find is the politics which is played by the family members. Leaving the personal lives one side, I also find myself engrossed in just two, three works every day. That is reading and the family affairs. I never find myself in the pace of life for professionalism. That is the one aspect which I am facing every day. So when I talk about certain scenarios that is related and that is much interrelated to me, that is two or three things. To mention very clearly about my personal lives and my professional life. If I talk about the general streaming of this video, we are going to cover the government examination preparation in this video. But uh, when I find myself engrossed in two, three things every day and every day, in and out, I feel like to have certain changes in my perspective and in my point of view as well. Although I I try to create certain perspective for everyone, but today I find myself that you need not create perspectives for others, and you need not wait much for others. Everyone has their own timing, and every clock beats at its own rate. So push yourself, push your mind according to the things necessitated by you, and you do not need to impose certain things on you. That is the first and foremost thing that happens every day in the life with me. Next, I want to introduce the lecture that is related to my commerce field, that is accounting in short. When I talk about balance sheet is equal to liabilities plus capital. Next, we have current assets. Current assets, when we talk about, these are those which are held in the form of cash or for conversion into cash. Next, we have cost benefit modifying principle. That was that the cost of a crime and accounting principle should not exceed its benefit. Next is the consistency principle. When we talk about the consistency principle, it means that there shall be consistency in everything out. And in the consistency principle, you should keep a certain point of view necessary with you, which is required. Next is introduction to cost accounting. Allocation of cost is the technique and process of ascertaining the cost. Dash is classifying, recording, and allocation of overhead to determine the cost of products, that is cost accounting. Which of the following is the division of cost accounting, that is cost control? According to Weldon, cost accounting is the technique and process of ascertainment of cost. The technique and process of ascertaining cost is called as costing. Cost accounting means costing using double entry system. Cost accountancy includes all of these: costing, cost accounting, cost control, cost audit. Which of the following is primary objective of cost accounting, that is ascertainment of cost. Next we have aggregate of all direct cost is known as prime cost.
Next, we have an expired cost resulting from a productive usage of an asset is called as expenditure. Examples of losses, both obsolescence and destruction of stock. Cost is ascertained by cost center and cost units. Cement industry cost unit is ton. Timber mill cost unit is cubic foot. Example of process costing is textile mill, chemical works, sugar mills, etc. Next we have which of the following is not the technique of costing, that is contract costing. Then next we have elements of costing. First is material, labor and overheads. When we talk about material, first of all you should know the reorder level or ordering level. Reorder level is maximum consumption into minimum reorder period. Then next is the danger level, that is normal consumption into maximum reorder period under emergency conditions. Then next is average stock level. When you talk about stock level, that is half minimum, half into minimum level, that is average stock level. Then again, when you talk about the reorder quantity, in reorder quantity it is minimum level plus half into reorder quantity. That is most important. Then when you talk about FIFO, that is first in first out. Next we have LIFO, that is last in first out. Then we talk about NIFO, that is next in first out. So these are the three MCQs which are very much important. After this, if we talk about the stock and all those things, first we have job evaluation. जॉब evaluation क्या होता है? एक मेथड ऑफ evaluation जिसमें हम जॉब evaluation क्या होता है? जॉब evaluation एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जॉब का एनालिसिस करते हैं हम, एंड जो एनालिसिस होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज बेस्ड अपॉन क्वालिफिकेशन कि पर्सन की क्वालिफिकेशन कितनी है. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. नेक्स्ट इज जॉब कार्ड्स. जॉब कार्ड्स हर वर्कर के लिए होते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो पाए जाते हैं. दैट इज द जॉब कार्ड्स. देन नेक्स्ट वी हैव मेथड ऑफ कॉस्टिंग. हमारे पास कई मेथड ऑफ कॉस्टिंग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग की बात की जाए तो आउटपुट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग दोनों चीज़ें होती हैं. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. सेकेंड वी हैव व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो उससे COGS हमारे पास आ जाता है. The next is what is the formula to find out cost per unit in unit costing. कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. उससे हमारे पास कॉस्टिंग आती है. देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट और सेल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है. दिस इज यूनिट जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नेक्स्ट वी हैव सोल्ड एट स्क्रैप मटेरियल. स्क्रैप मटेरियल की बात की जाए, स्क्रैप मटेरियल की बात की जाए तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को इंक्रीज करते हैं तो स्क्रैप मटेरियल हमारे पास आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज. जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? प्रिंटिंग प्रेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस. ये सारी जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज होती हैं. जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट एनालिसिस करना है. कॉस्ट एनालिसिस कैसे होता है? एलिमेंट वाइज और फंक्शन वाइज, दो तरीके से हमारे पास जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट एनालिसिस होता है. नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमिन द EO, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे हम डिटरमिन करते हैं? कॉस्ट को डिवाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. नेक्स्ट वी हैव इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द सरप्लस ऑफ मटेरियल. सरप्लस ऑफ मटेरियल को क्या करते हैं? क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्टर. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाए तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाए तो वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन चार चीज़ों में. फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, सेकेंड इज प्लानिंग, थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ इज स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वी हैव विद अस, दैट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जो स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो आगे 3 पार्ट्स की तरफ मूव डाउन है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज स्टैटिस्टिकल मेथड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सबसे पहले टर्म दी गई थी 1950
देखते हुए जो हमें मिली थी। देन नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? According to R. N. Anthony, management accounting is concerned with accounting information that is useful for management. मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट इज द बेसिस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिस फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग सिस्टम हैज अ वाइडर स्कोप? कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका वाइडर स्कोप है? दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ज़्यादा सब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके साथ डील करता है? गाइडेंस के साथ, नॉट टू सप्लाई डिसीजंस के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जाए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंटरप्रेट करता है वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? इज टू इनेबल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स या मिनिमाइज लॉसेस, या प्रॉफिट्स को बढ़ाना है या लॉसेस को मिनिमाइज करना है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट के साथ। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड करता है ओनली द एक्चुअल फिगर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली द एक्चुअल फिगर्स। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे रिकॉर्डेड फैक्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद बात की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड प्राइमरीली फॉर डिसीजन मेकिंग। सिर्फ एक डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मटीरियल यूज फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस दो तरीके के लिए हो सकता है, एक इंटरनल एनालिसिस, दूसरा एक्सटर्नल एनालिसिस। इन दोनों एनालिसिस के लिए ही जो फाइनेंशियल एनालिसिस हम कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू एनालिसिस फॉर एनी अदर फैक्टर। देन नेक्स्ट वी हैव कंपनी। एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड इज कैश फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस की बात की जाए तो एक ऐसा एनालिसिस होता है, वन इज द फंड फ्लो एनालिसिस, नेक्स्ट इज द कैश फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो मीन्स दैट टाइप ऑफ एनालिसिस जिसमें सारी फंड्स की स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और कैश फ्लो एनालिसिस जिसमें कैश, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, इन सबका गिव एंड टेक रिकॉर्ड किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारे पास वर्किंग कैपिटल का, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे गुडविल। फिर उसके बाद है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। Next we have another important thing, that is ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. इन्होंने AS3 दिए हैं हमें। AS3 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 और ये CFS से डील करते हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करते हैं AS3। नेक्स्ट वी हैव टर्म फंड। जो टर्म फंड्स हैं वो फर्स्ट डिफाइन की गई थी एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट वी हैव लिबरल क्रेडिट सेल्स। लिबरल क्रेडिट सेल्स की बात की जाए, हाई बिल्स पेबल जो हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट इज फंड फ्लो एनालिसिस। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नेक्स्ट वी हैव द टर्म करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। लिबरल क्रेडिट सेल्स क्या होती हैं? जिसमें हमने हाई बिल्स पेबल उसको रिकॉर्ड करना है।